Hi, good morning. Good morning, good morning. Good morning, Good morning. ma'am. Good morning. A very happy good morning. Good morning. Good morning, Enough, Deepti. you're already the co-host. That made you Yes, better. ma'am. Thank you so much. I saw it. Thank you so much. Yeah, thank you. So today's chapter, we are at day 22, before your very eyes. So this is the last chapter जब हम अपनी dream list पे काम कर रहे हैं. कल से हमारा track बदल जाएगा थोड़ा सा. So it's day 22. Before your very eyes is what? It is gratitude combined, like infused with the dream list. So जो भी हमने वो 10 ड्रीम लिस्ट बनाई थी या जो भी हमारे गोल्स एंड अचीवमेंट्स हैं जो हमको करने हैं, तो दैट इज व्हाट इट इज. तो उसमें हम बिल्कुल अमेलगमेट कर देंगे साथ में ग्रैटिट्यूड को, सो दैट वी कैन सी इट बिफोर आवर वेरी आईज हैपनिंग. And this chapter kind of truly accelerates the speed at which the dreams are coming to us. So in fact, I did this assignment today morning itself because I had a busy day at work. So इसमें what we can see here is that वो जो magician की hat होती है और magician का जो wand होता है जिससे वो आबरा का डाबरा गिली गिली छू करता है और suddenly कुछ मतलब बहुत ही मैजिकल चीज सामने आ जाती है, इसमें से रैबिट निकल रहा है. सो नॉर्मली हमने बचपन से मैजिक शोज देखे हैं in which we saw that all the जादूगर, अब तो आपको जादू के खेल पता नहीं होते हैं कि नहीं होते हैं, मतलब earlier it was a very common practice. So बहुत common shows होते थे. I have seen them a lot, when I was younger. So इसी तरह से वो magician की hat होती है, उसमें से वो कुछ भी निकालते हैं, कभी rats निकालते हैं, कभी rabbit, कभी pigeons निकालते हैं, ठीक है. और ये वाली जो मैजिक वॉन्ड उनका होता है, इससे आबरा का डाबरा करके. तो इसी मैजिशियन की हैट में से आज हम ग्रैटिट्यूड के साथ में अपनी ड्रीम लिस्ट को पूरा करेंगे. एंड वेरी सून यू विल सी ऑल योर बिग स्मॉल मीडियम डिजायर्स happening before the very eyes. So we'll kind of just read through this chapter. Anyone wants to? Shall I read? Yeah, please go ahead. Day 22, before your very eyes. I quote, "This world, after all our science and sciences, is still a miracle, wonderful, inscrutable, magical, and more to whosoever will think of it." Unquote. Thomas Carlyle, writer and historian. 7 years ago, when I first discovered the secret and the magical power of gratitude, I made a list of all my desires. It was a long list. At that time, there seemed to be no possible way my desires could come true. Nevertheless, I took my top 10 desires and I carried them with me on a piece of paper every day. Whenever I had an opportunity, I would take out my list and read through it, giving as much gratitude for each desire as I could, as though I had received it. With my number one desire, the desire I wanted more than anything else, I kept it constantly in my mind. And I would say the magic words, "Thank you," for it multiple times in a day and feel as if it had come true. One by one, every desire on my list magically appeared before my very eyes. As I received my desires, I would cross them off my list, and when I had new desires, I would add them to my list. One of my desires from my original long list was to travel to Bora Bora near Tahiti. After spending a beautiful week at the exact place in Bora Bora I had listed, another beautiful thing happened.
I was flying to the mainland of Tahiti on my way home when the airplane stopped en route to pick up passengers. The flight had been empty, but it filled to the brim with native Tahitians, and suddenly laughter, smiling faces, and a happiness that was palpable surrounded me. As I enjoyed the short flight with these beautiful people, it became crystal clear to me the reason why they were so happy. They were grateful. They were grateful to be alive. They were grateful to be on the airplane. They were grateful to be with each other. They were grateful for they were going. They were grateful for everything. I could have stayed on that plane and traveled around the world with them. It felt so good to be with them. And then it struck me that I had just received my final desire. Bora Bora was the last desire on my original long list. And the reason I was on that plane was before my very eyes. Yeah, one Gratitude. second, Radha. We'll just take a break here. So, इसमें जो first paragraph है, उसमें जो quote है by Thomas Carlyle, उसमें clearly लिखा हुआ है, this world, we all know that there is a lot of logical explanation to everything that people want. हर मतलब लोग logics में बहुत ज़्यादा चले जाते हैं. बहुत scientific evidences हैं. Science is all around us. I personally am from the science, this thing. I've done lots of researches. But having said that, there is some magical power, some force which is holding this planet together, which is making the sun rise, which is making the sun set, which is making the stars happen. You know, there are other planets other than Earth. There is life on Earth. People are born. There are trees growing on their own. अपने आप बारिश होती है, sea है, land है. You know, body के अंदर अपनी एक intelligence है. मतलब human body anatomy physiology को अगर हम समझे, so no matter how much logic we try and put into it, there is some kind of a force which is making things happen on its own. मतलब हमको पता नहीं होता है कि किस तरह कैसे हमारे न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होते हैं और कैसे अपने आप वो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है अगर बॉडी में कोई कमी होती है. अपने आप अंदर अंदर इंटरनल इतने हैमरेजेस हमें होते हैं एक दिन में, बिकॉज ब्लड कैपिलरीज और ये सब बहुत पतले होते हैं, मतलब बिल्कुल सुई से भी पतले होते हैं. सो वो सब होता है, उनकी हीलिंग एंड रिपेयरिंग अपने आप चलती है. अपने आप हॉर्मोन्स बनते हैं, मतलब कोपिंग मैकेनिज्म्स होते हैं अंदर ही बॉडी के फिजियोलॉजिकल अलग. ये कैसे होता है सब कुछ? मतलब देयर इज सम ह्यूज लाइक दैट, देयर इज दैट फोर्स इनसाइड व्हिच इज मेकिंग आवर बॉडी फंक्शन एंड वर्क. ओके, बट हाँ, हम उसको हैम्पर कर देते हैं उल्टा पुल्टा खाना खा के, बाय रॉन्ग लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस एंड ऑल ऑफ दैट. मतलब उसको ब्लॉक कर देते हैं. बट अदरवाइज बॉडी की जो अपनी ह्यूमन इंटेलिजेंस वो इतनी बढ़िया है कि किसी डॉक्टर को होने की जरूरत ही नहीं है. मतलब योर बॉडी इज अ फार्मेसी एंड अ डॉक्टर इन इटसेल्फ. इट्स अ हॉस्पिटल इन इटसेल्फ. इट नोज हाउ टू हील एंड रिपेयर ऑन इट्स ओन. सो कितनी भी साइंटिफिक एविडेंस है, कुछ भी हो, देयर इज ऑलवेज लाइक इवन द डॉक्टर्स इन द वर्स्ट केस सिनेरियोज ऑल्सो आपने सुना होगा कि वो बोलते हैं कि देखो दवा से ज्यादा दुआ काम आती है ना. तो दुआ क्या है? ब्लेसिंग्स है. It is that blessing that the universe is giving to us, जिससे हमारी healing, repairing और मतलब हर problem के साथ solution आ जाता है. चाहे वो external problem भी हो, कोई solution आ जाएगा, है ना. तो ये जो सारे, in spite of all the scientific evidences and researches all around us, life is still a miracle. I mean, like, it's wonderful, inscrutable, magical, and more to whosoever will think of it. So we know that there is some force which is higher than our human intelligence, जो हमारे reasons and logics पूरे time लगते रहते हैं, उसके ऊपर एक power होती है, and that power is the power of the universe. Okay, and that is what we are activating in our life. Universe हमसे relate करते हैं सिर्फ frequency की मदद से. It's हमारी frequency high होनी चाहिए. It is only about energy, frequency and vibration जिसको हम vibe भी बोलते हैं. So we normally say na that the vibe of that person is really nice, or I really vibed well with that person. So it is that vibration, that frequency, that energy. Universe की भाषा यही है, भाषा भी यही है और परिभाषा भी यही है. ठीक है? So हमको उस
अगर हमको यूनिवर्सल फोर्सेस को एक्टिवेट करना है अपने बॉडी के अंदर, अपनी जिंदगी में, अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, तो हम उनकी भाषा के साथ, हमारी लैंग्वेज टू कम्युनिकेट विद द यूनिवर्स इज रेज योर वाइब्रेशन. दैट मीन्स बी इन ग्रैटिट्यूड एंड लव मोस्ट ऑफ द टाइम. ओके, सो रॉन्डा बर्न ने थोड़ा लेवरेज दिया हुआ है और बोला है कि चलो 51% ऑफ द डे भी अगर आप अच्छे वाइब्रेशन में रहते हो तो आपकी जिंदगी सुंदर हो जाएगी. लेकिन क्यों नहीं हम इसको कोशिश करके 100% बना लेते हैं. Let's be in gratitude all the time, whether some good is happening, whether some bad is happening, doesn't matter. Bad भी जो होता है, these are the, you know, how do I say, like these are the barricades. When life is not good, universe puts a barricade in front of. Barricade मतलब वो जो पुलिस नहीं, वो सारे लगा देते हैं रास्ता रोकने के लिए कि ये वाला रास्ता बंद है, वो बैरिकेड्स जो होते हैं. तो कभी कभी यूनिवर्स हमारे सामने, हमारी जिंदगी में बैरिकेड्स लगा देते हैं, क्योंकि यूनिवर्स को दिखता है कि आगे वाला रास्ता हमारा अच्छा नहीं है. तो वो एक्चुअली अच्छे के लिए होता है, लेकिन उस वक्त हमको लगता है ये बैरिकेड क्यों आ गया, मैंने तो इतना प्रे किया था, मैंने इतना चाहा था इस वाले रोड पे, लेकिन फिर भी यहाँ पे वो रोड ब्लॉकेजेस आ रहे हैं. ठीक है, वो बहुत अच्छे के लिए आ रहे होते हैं, और ये चीज हमको बहुत जल्दी रियलाइज हो जाती है. So, you know, that is the intelligence of the universe. So, जब हम हाई फ्रीक्वेंसी में होते हैं, अगर आपने अपने ड्रीम्स के लिए पहले ही थैंक यू कर दिया होता है, तो बहुत सारे बैरिकेड्स भी आएंगे. ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जिस रास्ता आपने सोचा उसी रास्ते पे आप चलते जा रहे हो, बिकॉज वो रास्ता कई बार आपको अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचाता है. उस रास्ते पे आगे जाके एक ब्लॉक होता है, तो अपने आप आपको यूनिवर्सल फोर्सेस मेक यू टेक अ यू टर्न, which we feel very bad about at that moment. You know कि ये क्यों हो गया, ये कैसे हो गया. But of course very soon you will realize that अगर वो नहीं होता तो ये नहीं होता, और वो होना इसके लिए जरूरी था. ठीक है, so इसीलिए trust the universe and be in that frequency of gratitude and love most of the time. Okay, try and make it all the time if you can, of course. Like अच्छा बुरा जो भी है सब अच्छे के लिए ही है. You know, मतलब वही है ना, रब की रजा में राजी रहो, because there is always a higher reason for everything that happened. So Rhonda Byrne ने अपने लिए बताया है कि 7 साल पहले, मतलब ये जब बुक लिखी थी उसके 7 साल पहले उन्होंने सीक्रेट मूवी रिलीज की थी, और तब उन्होंने बताया है कि उन्होंने डिस्कवर किया था इस मैजिकल पावर ऑफ ग्रैटिट्यूड को, और उन्होंने अपनी बहुत लंबी एक ड्रीम लिस्ट बनाई थी, और वो बहुत ही लॉन्ग लिस्ट थी, और उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि उस वक्त मुझे ये लग रहा था कि कोई मतलब मुमकिन ही नहीं है कि मेरे डिजायर्स मतलब उस वक्त पूरे हो पाते, बिकॉज इतने बड़े उनके डिजायर थे. वो तो बिल्कुल ही -100 पे थी उस टाइम. बहुत उनका क्रोड्स का डेट था उनके ऊपर, बहुत कर्जा चढ़ा हुआ था. वो अपने सीक्रेट की पूरी क्रू को वो सैलरी नहीं दिया, मतलब शी कुड नॉट अफोर्ड टू गिव देम मनी while she was filming. फिर वो मूवी जब रिलीज हुई उसके बाद उसका इतना पैसा आने लगा. वो सीक्रेट वाली टीम आज भी उनके साथ काम करती है. मतलब ये 2004 की बात है और अभी 2023 चल रहा है. सो इट्स बिन 19 years नाउ, और वो सेम टीम के साथ काम कर रही हैं अभी भी. इनकी जो 5 बुक्स अभी तक आई हैं, सीक्रेट, मैजिक, पावर, हीरो एंड द ग्रेटेस्ट सीक्रेट, तो उसमें सब में सेम टीम ने काम किया है, चाहे वो एडिटिंग हो, चाहे वो इलस्ट्रेशंस हो, यू नो, लाइक इस तरह से. सो दैट इज हाउ ब्यूटिफुल हर जर्नी हैज बीन. तो जब उन्होंने ड्रीम लिस्ट बनाई थी अपने लिए, तो उनका बहुत मतलब कोई स्कोप ही नहीं था उस वक्त, उनको लग रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने बनाई उस ट्रस्ट इन द यूनिवर्स के साथ में, दैट आई नो दैट आई विल फुलफिल ऑल ऑफ देम. ओके, और सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो हमारे लिए लेसन है आज, आई टुक माई टॉप 10 desires carried with me on a piece of paper every day. This is what we need to do. Okay, for the last 5 days I have started doing this. Okay, I took my top 10 desires and I carried them with me on a piece of paper every day. तो मैं इसको रोज पढ़ती हूँ. ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुझे एक्चुअली एक दिन मैंने रिफ्लेक्ट किया कि मेरे टॉप 10 डिजायर्स कौन से हैं. मुझे एक्चुअली 6-7 से ज्यादा याद ही नहीं आ रहे थे. मतलब दैट वाज अबाउट दिस थिंग. अभी भी स्ट्रगल था, मतलब ठीक है ये तो 1-1.5 साल पहले की बात है, अभी भी स्ट्रगल था कि 10 मुझे फट याद आ जाए. I just couldn't, you know. Then this was like an awakening, and I thought that nothing doing, you know, like I have to read them every day. And for a few days I've been reading them on a daily basis. Today also I've done this practice already. Okay, so मतलब सुबह I wanted to do it in the Brahm Muhurat only, so I thought that let me. और ये तो रोज की प्रैक्टिस है, आज नहीं हुआ तो कल कर लेंगे.
कल कर लेंगे, अब तो ये रोज ही करना है। टॉप 10 डिजायर लिस्ट अपने तो बिल्कुल आंसर होने चाहिए, और फटाफट काटो और फटाफट उसमें ऐड करो। अपनी 10 डिजायर लिस्ट का नंबर आप पूरा रखो पूरे टाइम। ओके, सो इसमें ये वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक योर टॉप 10 डिजायर्स एंड कैरी विथ यू ऑन अ पीस ऑफ पेपर एवरी डे। Whenever she says further, जब भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती, मैं अपनी उस लिस्ट को निकालती हूँ और रीड थ्रू इट and giving as much gratitude for each desire as I could, as though I had already received it. ठीक है, like thank you for giving me this wonderful opportunity to do something whatever it is, as if, और उसमें thank you निकाल के, पहले desire list निकाल के एक एक पढ़ के thank you बोल दो, as if you've already got it. और इनका जो नंबर 1 डिजायर था, जो बहुत ही बड़ा डिजायर था, इज टू ब्रिंग जॉय टू मिलियंस ऑफ पीपल। इन्होंने यहाँ पे लिखा नहीं है, बट क्योंकि इनकी बाकी चैप्टर्स हमने पढ़े हुए हैं तो हमको पता है इनका टॉप 10 में से नंबर 1 डिजायर था टू ब्रिंग जॉय टू मिलियंस ऑफ पीपल थ्रू हर वर्क। ठीक है, ये इनका टॉप 10 डिजायर था, वो इनका फुलफिल हो गया था सीक्रेट मूवी रिलीज करते ही, और उसके बाद लगातार एक के बाद एक ये बुक्स इन्होंने लिखी है। सो वो सारा, एंड शी सेड दैट मैं उस डिजायर को, जो उनका टॉप मोस्ट डिजायर था, उसको वो हमेशा याद रखती थी और उसमें खूब सारा ग्रेटिट्यूड बोलती थी मल्टीपल टाइम्स इन अ डे, एंड शी फेल्ट एज इफ इट हैड कम ट्रू। ठीक है, फिर उन्होंने देखा कि उनका एक एक डिजायर लिस्ट क्रॉस होने लगा, और जैसे ही वो क्रॉस करती थी वो एक नया डिजायर ऐड कर देती थी उस लिस्ट में, और उसी तरीके से उनका एक डिजायर था बोरा बोरा जाना। तो वर्ल्ड में अगर आप कभी गूगल करोगे ना 10 मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड और 10 मोस्ट हैप्पी प्लेसेस, तो वो हैप्पीएस्ट प्लेसेस में बोरा बोरा का नाम आता है। ठीक है, बहुत खुश लोग वहां के होते हैं, और इसके कारण लाइक जनरली दे इंजॉय द बेस्ट ऑफ हेल्थ, और बहुत कॉमराडरी उनकी आपस में होती है। सो वो वहां पे उनका जाने का डिजायर था, विच इज इन फ्रांस। और वो वहां पे, मतलब जब वो फ्लाई कर रही थी तो उन्होंने देखा कि सारे लोग इतने ज्यादा खुश थे, पैसेंजर्स खुश थे, आपस में बातें कर रहे थे, और मतलब इतना लाफ्टर था उनके लाइफ में, स्माइलिंग फेसेस एंड हैप्पीनेस, that it was palpable, like it was very very infectious, like this kind of a happiness that, so she said that बहुत short flight थी वो, और बट उन्होंने खूब एंजॉय की, बिकॉज कहते हैं ना कि अगर आप किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी में होते हो जो बहुत हाई वाइब्रेशन का होता है, तो आपकी भी वाइब्रेशन वैसे ही, कहते हैं जैसे लाइट कहीं पे भी होती है, अब लाइट जली है रूम में, तो जितने भी लोग रूम में बैठे हैं उन सबको लाइट मिलेगी ना। ऐसे तो होता नहीं है कि सिर्फ एक पर्सन को लाइट मिलेगी जिसने लाइट ऑन की है, सबको मिलेगी वो लाइट, उसकी रोशनी जो होती है। इसी तरीके से अगर आप ऐसे लोगों की कंपनी में रहते हो, सो इसलिए कहते हैं ना, चूज योर फ्रेंड्स वाइजली एंड यू कैन नो पीपल बाय द फ्रेंड्स दे हैव, बाय द पीपल दे hang around with. So you can always judge a person by the people they hang around with, because you birds of same feather flock together. So it is like, जब आप किसी हैप्पी प्रोग्रेसिव पर्सन की कंपनी में होते हो, आपके पास चॉइस ही नहीं है टू बी प्रोग्रेसिव एंड हैप्पी, बिकॉज उनकी लाइट आपको इलिमिनेट कर देगी और पूरे टाइम करती रहेगी। आप ऑफ ट्रैक भी जाओगे, एकदम से पकड़ के वापस आ जाओगे कैटापुल्ट की तरह। दिस इज हाउ ब्यूटिफुल इट इज। सो वहां पे उन्होंने देखा कि वो खुद इतनी खुश हो गई जस्ट उस फ्लाइट पे रह के, मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी इतनी रेज हो गई बिकॉज इतने खुश वो लोग थे, एंड दे वर ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग, टू बी अलाइव, दे वर ग्रेटफुल टू बी ऑन द एयरप्लेन, दे वर ग्रेटफुल टू बी विद ईच अदर, दे वर ग्रेटफुल फॉर वेयर दे वर गोइंग, दे वर ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग। आई कुड हैव स्टेड ऑन दैट प्लेन एंड ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड विद देम। उनको ऐसा लग रहा था मैं क्या काश पूरी दुनिया इन लोगों के साथ घूम सकती हूँ कि नहीं। सो इट फेल्ट सो गुड टू बी विद देम। एंड देन उनको याद आया कि अच्छा, ये बोरा बोरा जाना तो मेरी ओरिजिनल लिस्ट में फाइनल डिजायर था, क्योंकि उन्होंने इतनी बार पढ़ी थी तो उनको वो ओरिजिनल लिस्ट भी अपनी बिल्कुल याद थी दिमाग में, है ना। फिर उनको याद आया कि बोरा बोरा जाना तो मेरा लास्ट डिजायर था, इसका मतलब मेरी डिजायर लिस्ट कंप्लीट हो गई। सो एंड ऑल दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ ग्रैटिट्यूड। दिस इज व्हाट शी हैज टू से। हाँ जी। I have shared this story as an inspiration for you, because no matter how big your desires seem to be, you can receive them through gratitude. Even more than that, gratitude will bring a joy and happiness for life that you have never felt before, and that is truly priceless. From the time I began using gratitude
and the law of attraction to the time I received my final desire on my original list was 4 years. To give you an idea of the enormousness of receiving all my desires in that amount of time, when I created my desire list, my company was $2 million in debt, and I had 2 months before I would be forced to shut it down and would lose my home and everything I own. The money I owed on my personal credit cards was a small fortune, and yet on my desire list was to own a big house overlooking the ocean, to travel to exotic places in the world, to have paid all my debts, to expand my company, to restore every sorry, to restore every relationship to the best it could be, improve the quality of my family's lives, to be 100% healthy again, and have unlimited energy and excitement for life, along with the usual list of material things. And my number one desire, which seemed like an absolute impossibility to many of the people around me, was to bring joy to millions of people through my work. The very first desire that I received was bringing joy to millions of people through my work. The rest of my desires magically followed, and one by one, as they appeared before my very eyes, I crossed them off my list. So now it's your turn to use gratitude's magical power to make your desires appear before your very eyes. At the start of the day, take your top 10 desire list that you created. Read through each sentence and desire on your list, and for 1 minute, imagine or visualize that you have received your desire. Feel as much gratitude as you can, as if you have it now. Carry your desire list with you today in your pocket. On at least 2 occasions in the day, take out your list, read through it, and feel as much great gratitude for each one as you can, as though you have received it. If you want your desires to come more quickly, I would highly recommend that you carry your desire list with you in your wallet or purse from this day forward. And whenever you have time, open it up, read through it, and feel as much gratitude as you can for each one. When your desires appear before your very eyes, cross them off your list and add more. And if you are like me, each time you cross a desire off your list, you will be in tears of joy, because what seemed impossible was made possible through the magical power of gratitude. Magic practice number 22, before your very eyes. Number 1, count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list. And at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you. And feel as grateful for that blessing as you can. Number 2, at the start of the day, take your top 10 desire list that you created. Number 3, read through each sentence and desire on your list, and for 1 minute, imagine or visualize that you have received your desire. Feel as much gratitude as you can. 4, carry your desire list with you today in your pocket. On at least 2 occasions in the day, take out your list, read through it, and feel as much gratitude as you can. Number 5, just before you go to sleep tonight,
Hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Thank you so much, Anu, for Thank you, reading ma'am. so beautifully with all the pauses and punctuations Thank you, ma'am. and emotions. So ये जो रोंडा बर्न ने अपना बताया है कि इन्होंने जो टॉप 10 डिजायर लिस्ट बनाई थी, so she's mentioned that she was 2 million in debt that time. You know, जब इन्होंने ये लिस्ट बनाई थी that she wants to own a huge house by the ocean. Okay, और इनके to restore every relationship like without exception. Okay, to have a very good quality of life. Very good quality of life कैसे होगा? जब बहुत abundance होगा और richness in health होगा, है ना? And to enjoy the best of health, etc. etc. इस तरह के उनके desires थे. और ऐसा नहीं था कि मतलब आसान था उनके लिए डिजायर करना, बिकॉज ऑब्वियसली कोई इतने $1 million डेट में है या जिनका क्रेडिट कार्ड का जो बिल है वो वाज सम फॉर्च्यून, शी मेंशन, यू नो, लाइक इतना ज्यादा उन पे कर्जा चढ़ा हुआ था. और उन सीक्रेट मूवी तो पूरी उस पे ही बनाई थी, लोन पे बनाई थी. तो ऐसे में इतने बड़े बड़े डिजायर को डिजायर करना, ये ही अपने आप में आई थिंक बहुत करेज की बात है. So what she's trying to tell us is that no matter how big your desires appear to you right now, just put them on the list, because the power, the force of gratitude, the universe is going to definitely make it happen for us. Okay, and it is guaranteed fact. लेकिन हमको वैसे करना है जैसे इन्होंने भी किया था, ठीक है, जो इन्होंने ये लिखा था दैट So what we have to do today is that आज हमको अपनी desire list, अगर देखो जिस तरह से इन्होंने लिखा है, that's why I wanted to read that. हाँ, ये वाला. So if you want your desires to come more quickly, हम चाहते हैं ना more quickly होना obviously. So I would highly recommend, देखो अगर ये recommend कर रही है ना तो उसके पीछे कुछ reason है, and she is the mentor right now, so we better listen to her. I would highly recommend that you carry your desire list with you in your wallet or purse from this day forward. आज के बाद से हाथ से लिखी हुई अपनी डिजायर की लिस्ट अपने वॉलेट में या पर्स में हम आज ऑनवर्ड्स रखें, और जब भी हमको टाइम मिले, open it up, read through it and feel as much gratitude as you can for each one. कभी कभी दिन में 1 बार, कभी कभी हफ्ते में 2 बार, कभी कभी दिन में 4 बार, जैसे आपको सहूलियत हो वैसे आप इसको कर सकते हो अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, ठीक है. बट अगर ये हाईली रिकमेंड कुछ कर रही हैं, ऑब्वियसली उसको करने से रिजल्ट भी वैसे ही आएगा जैसे इनको आया था. और इनको 4 साल लगे अपनी ओरिजिनल डिजायर लिस्ट को कंप्लीट करने में. आई ऑल्सो टुक समवेयर अराउंड 2.5 quarter to 3 years. मेरे पूरे डिजायर लिस्ट जो ओरिजिनल लिस्ट थी जो मैंने पहली बार बनाई थी, उसमें सारे डिजायर्स फुलफिल हो गए. उसमें फाइनेंशियल गोल्स थे, उसमें मेरा आई वांटेड टू रिप्लेस माय कार, सो मेरा कार गोल था. उसमें मेरा ये था कि मैं बिना स्पेक्स के पढ़ पाऊँ. बहुत बहुत सारी ऐसी चीजें थी, और 3-4 और, तो वो ऑल ऑफ देम हैव गॉट फुलफिल्ड, ऑल 10 ऑफ देम. ऑफ कोर्स मुझे डॉक्टरेट में आई वांटेड टू मेक अ नेम एंड यू नो लाइक काइंड ऑफ रियली गेट दैट गोल्ड मेडल. उस गोल्ड मेडल की बजाय शील्ड मिली है बहुत बड़ी सी, ठीक है. गोल्ड मेडल तो नहीं मिला, शील्ड मिली थी, बट एग्जैक्टली वैसे ही जैसे मैंने लिखा था. सो आई ऑल्सो टुक समवेयर अराउंड 2 to 3 years पूरे ओरिजिनल टॉप 10 डिजायर्स को फुलफिल होने में. और उसके बाद अभी तो सारे वो रिप्लेस हो गए, बिकॉज जैसे ही एक कटता है वैसे ही खूब सारा थैंक यू दे के उसको दोबारा एक ऐड हो जाता है. सो वो 10 नंबर बरकरार रहता है, वो कम नहीं होता कभी भी, है ना. वही हमको करना है, ऐसे ही हमको ऐसे ही सिखाया गया है ना बुक में. And that is what and you will see, so इसमें लिखा हुआ है, and when your desires appear before your very eyes, cross them off your list and add more. So अपना 10 नंबर को वो करो और कंटिन्यू रखो, और नए नए desires को. It is very good to have more and more desires, you know, like because that gives so much purpose and meaning to our life. At times जरूरी नहीं है कि हमारे ही लिए हो. At time आपको इसलिए भी पैसा चाहिए होता है ताकि आप कोई सोशल कॉज के लिए वर्क कर पाओ. चाहे आप कभी हो सकता है इसलिए आपको बहुत पैसा चाहिए
कि आप अंडर प्रिविलेज्ड गर्ल्स की स्टडी को स्पॉन्सर करो, या कहीं पे आपको कहीं पे कुछ वो देना है, यू नो लाइक फूड प्रोवाइड करना है इन अ सर्टेन वे एवरी मंथ, तो आपको उसके लिए लगातार पैसे भी तो चाहिए होंगे ना, मतलब मोर एंड मोर मनी, सो यू कैन गो एंड गिव फूड, नाइस फूड इन ओल्ड एज होम्स या बच्चों के वहां पे, या बहुत सारे ऐसे ऑर्फनेजेस होते हैं वहां उनको स्टेशनरी की बहुत कमी होती है, मतलब ऑफ कोर्स वो लोग ऐसे ही इस तरह से लोग देते हैं तो वैसे उनको स्टेशनरी मिलती है, तो मतलब ये हमारा फर्ज है कि हम लोग जाके उनको कॉपीज और एटलीस्ट पेंसिल बॉक्सेस, ज्योमेट्री बॉक्सेस, पेंसिल्स, इरेजर्स, ये सब लगातार प्रोवाइड करें, बिकॉज कॉपीज खत्म होती रहती है फिर उनको और चाहिए होती है, तो इस तरह के भी हमको करना होता है ना. एवरीथिंग इज नॉट फॉर अस, वी आर जस्ट द चैनल्स. द डे वी रियलाइज दैट वी आर चैनल ऑफ ब्लेसिंग्स इन अदर्स लाइव्स, दैट डे ऑफ कोर्स हमको मतलब बिल्कुल वो सर्कुलेशन सेट हो जाएगा यूनिवर्सल फोर्सेस का, मतलब वो आता रहेगा और आपके थ्रू जा रहा है, आ रहा है. So as I take these sessions, it's only to give back from all the mentors that I have received. It is only to give them back, because obviously this channel की अगर मुझे कहीं से कोई information या कुछ courses मैंने किए हैं तो अपने लिए थोड़ी किए हैं सिर्फ, obviously I'm a channel, no. सो मेरे थ्रू और भी लोगों के पास जाएगा, आपके थ्रू और लोगों के पास जाएगा, आप ऑफिस में जाओगे तो वहां पे आप रेडिएट करोगे ये वाला इल्यूमिनेशन, अपने आप आपके काम में, आपके ऑफिस के रिश्तों में, हर जगह पे वो नजर आएगा दैट देयर इज समथिंग डिफरेंट अबाउट यू, एंड द वे यू कंडक्ट योरसेल्फ विल बी वेरी डिफरेंट. ये अपने आप ये सबकॉन्शियस लेवल पे चेंजेस होने शुरू हो जाते हैं और हम रियलाइज नहीं करते. हो सकता है आपको लगे कि मैं तो किसी के लिए कुछ नहीं करती, बट आपको पता नहीं है कि आप कितने लोगों की जिंदगी मतलब आपसे टच होके चेंज हो जाती है, so that is who you all have become already. घर वालों के भी इम्पैक्ट पड़ रहा है और जहां पे जा रहे हैं, जैसे अनु की वो इतनी छोटी सी बेटी है काव्या, सो वो इतना फॉलो करती है ग्रैटिट्यूड या मतलब इस तरह करके, बहुत ही प्यारा बच्चा, और ऑब्वियसली इन हर फ्रेंड सर्कल she would be very different, and as she'll grow up she'll be a very different kind of a person, very empowered, very powerful, like उसको पता होगा कि अच्छा I have to get into this university, so this is how to go there, how to get into that university, and how her conduct with others is going to be different. This is who we become, because we have to realize that we are just a channel of the universe. That is one thing that has to be there, and that is what Rhonda Byrne's life hovered around. अब आज की प्रैक्टिस में ये जो टॉप 10 डिजायर लिस्ट है हमारी, इसको हमको अब मतलब लिखना है, जैसे भी डिजिटल कॉपी आप इसकी रख सकते हो, जैसे भी आपको कन्वीनियंट हो. आप इसमें अगर आपने सॉफ्ट कॉपी रखी हुई उसकी, उसको आप अपने अपना खुद का जो व्हाट्सएप ग्रुप है आप उसमें डाल सकते हो, या अपनी गैलरी में उसकी फोटो खींच के आप रख लो, क्योंकि फोन बहुत एक्सेसिबल होता है ना. कई बार तो हम सिर्फ वॉलेट लेके निकल जाते हैं अगर हमें कहीं जाना होता है, कभी कभी वो भी नहीं लेके जाते, तो हो सकता है हमारे पास पूरे टाइम हो नहीं वो लिस्ट, लेकिन अगर आपके फोन में होगा तो पूरे टाइम रहेगा आपके पास. तो आप उसकी फोटो खींच लो या जैसे भी आपको रखना है, but keep it accessible from this day forward and read through it every day, multiple times in a day, as and when you have time, and give immense gratitude to it. So आज वाली जो प्रैक्टिस है उसमें हमको ये लिस्ट अपनी देख के 1 मिनट के लिए विजुलाइज करना है हमको अपनी ड्रीम, मतलब एक एक को. जैसे फर्स्ट अगर आपने पढ़ा, सपोज यू वांट टू बाय अ ब्यूटीफुल हाउस इन गुड़गांव विच हैज 5 bedrooms एंड व्हाटएवर इट इज, तो आप उसको मिनिमम 1 मिनट के लिए पढ़ो, उसको अपनी लिस्ट हो रहा है, कहाँ पे आपने गणेश जी की मूर्ति रखी हुई है, बिकॉज गणपति सबसे पहले जाते हैं ना घर में, तो इस तरह से कैसे आपने रखा हुआ है, एंड कितने लोगों को बुलाया हुआ है, गृह प्रवेश में फैमिली मेंबर्स आए हैं, सब इतना अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं. इमेजिन रिसीविंग मिठाई का डब्बा फ्रॉम पीपल और गिविंग लड्डूज टू एवरीवन, दैट्स व्हाट वी गिव ना हवन के प्रसाद में. तो इस तरह से आप पूरा विजुअलाइज करो दैट बालकनी में खड़े हो एंड एवरीबॉडी सेइंग कितना ब्यूटीफुल व्यू है. सो दैट वे ये 1 मिनट विजुअलाइजेशन के बाद आप ड्रीम नंबर 2 पे चले जाओ. फिर ड्रीम नंबर 2 पे आप गए तो इट वाज मे बी टू हैव अ ग्रैंड चाइल्ड और अ डॉटर, और मतलब जो भी आपको मतलब वो चाहिए, बेबी चाहिए घर में, या तो ग्रैंड चाइल्ड चाहिए या अपना बेबी चाहिए.
तो वो बेबी हुआ, कितना प्यारा प्यारा, उसके ब्लैंकेट को फील करो, उसका देखो मुंह कैसे टेढ़ा मेढ़ा होता रहता है बच्चों का, स्मेल द स्मेल ऑफ दैट न्यू बेबी, बड़ी वो जॉनसन टाइप की स्मेल आ रही होती है, उनके सोल ऑफ द फीट इतने सॉफ्ट सॉफ्ट से लगते हैं, बिल्कुल कॉटन जैसे, उनको टच करो, जो बच्चों के सोल होते हैं ना, पैरों के फीट के जो सोल होता है, तो उसको टच करो, सी दैट ब्यूटीफुल ब्लैक हेयर ऑन द स्कैल्प एंड you're touching it and you're feeling that softness and everybody saying मुझे भी दो बेबी, मुझे भी दो बेबी, ये आपने विजुलाइज किया। अब आप ड्रीम नंबर 3 पे आ जाओ, जो भी आपकी है, so that way visualize for 1 minute all your 10 dreams, और दिन में 2 बार और ऐसे करना है, तो आज एक तो ये सुबह सुबह करना है, at the start of the day, जब लिखा हुआ है at the start of the day, which means at the start of the day. Start of the day is not 10 o'clock or 11 o'clock. Okay, so at the start of the day, take your top 10 desire list that you created, read through each sentence and desire on your list, and minimum for 1 minute, imagine or visualize that आपने वो desire receive कर लिया है, और खूब thank you feel करो, मन में बोलते रहो कि शुक्र है भगवान का, शुक्र है, thank you for giving me this। और आज ये desire list अपने साथ पूरे दिन रखो, अपनी पॉकेट में, पर्स में, डिजिटल कॉपी फोन पे, जहां पे भी आपको रखना है। और ये सुबह तो आपने कर ही लिया, और इसके अलावा और 2 ओकेजन पे आपको ये लिस्ट निकालनी है, रीड थ्रू इट एंड फील एज मच ग्रेटिट्यूड एज यू कैन। विजुअलाइजेशन बाकी 2 बार नहीं करना है, विजुअलाइजेशन सिर्फ सुबह करना है, ठीक है। 2 बार आपको रीड करना है और थैंक यू बोलना है फॉर रिसीविंग, थैंक यू रिसीविंग। विजुअलाइजेशन सिर्फ 1 बार करना है, बाकी के 2 बार हमको अच्छे से ड्रीम लिस्ट पढ़नी है और फील करना है थैंक यू कि आपने वो रिसीव कर लिया। तो ये टोटल ऑफ 3 हो जाएगा। 3 बार आज हमको ये ड्रीम लिस्ट निकालनी है अपनी। सो 3 इज अ नंबर ऑफ क्रिएशन, और ये प्रैक्टिस करने के बाद यू हैव सेट दैट मैजिक इनटू मोशन फॉर द रियलाइजेशन ऑफ योर ड्रीम्स। प्रैक्टिस ये है आज की। इसके अलावा सुबह काउंट माई ब्लेसिंग्स, जो आपको 10 ब्लेसिंग्स लिखनी होती है, that is I'm so grateful for this, I'm very happy and grateful for this, that I have a house where I live with my family, I'm very happy and grateful to my mobile phone which I use for work, to communicate with others, and also to store my data, to take pictures as a camera, so I'm truly grateful for। इस तरह से 10 जो blessings already जो नियामत आपकी लाइफ में है उनको और रीड करना होता है फिर, और फिर उसको एक एक के बाद 3 बार थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना होता है, मुंह से बोलना होता है, आउट लाउड, ठीक है। और रात को मैजिक रॉक प्रैक्टिस है हमारी, जिसमें हम वो पत्थर लेते हैं अपना जो मैजिक रॉक है, और थिंक थ्रू द डे एवरीथिंग दैट हैपेंड। सुबह से इसमें खूब जोर लगाओ दिमाग पे जोर लगा के सोचो और क्या हुआ था, अच्छा उसने आज मुझे बोला था आज मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, थैंक यू, उसने अच्छा वहां से मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला था, आई एम सो थैंकफुल टू दिस पर्सन। उसके बाद आई हैड समोसा, दे वर सो टेस्टी, थैंक यू टू दैट आउटलेट जहाँ का समोसा था, एंड थैंक यू टू दिस पर्सन हु गॉट इट फॉर मी, एंड थैंक यू टू द पर्सन हु सर्व्ड मी। फिर chai was so nice, so tasty, I really love that tea, and thank you to that person for serving such a nice tasty chai that made me feel so rejuvenated। इस तरह पूरी छोटी छोटी चीजें पूरे दिन भर की सोचो, और उसमें से बेस्ट चीज देखो कौन सी है, उसके लिए थैंक यू बोलो और सो जाओ। सो दिस इज द प्रैक्टिस फॉर टुडे। और दूसरी वाले बुक में आज हम फ्रेश डिपार्चर कर रहे हैं मनी के वर्ल्ड में। इसके बाद आप देखना ये वाला जो चैप्टर है ना, इसके बाद आपके मनी में कितना ह्यूज सर्ज आएगा। ये इतना पावरफुल चैप्टर है, पता नहीं डॉक्टर मर्फी ने क्या इंटेंशन इस चैप्टर में डाली है। जिन लोगों ने ये मनी वाले चैप्टर्स किए ना, उनके लाइफ में पैसों की बारिश starts raining money on them। this is how powerful this chapter is। So I'm so looking forward to studying this with all of you। So it is how to use power of your subconscious for wealth। Wealth doesn't always mean money. It can mean abundance of properties. It can come to you as jewelry, precious stones, or whatever. That's what wealth is, like, So that is what it's about. Beautiful chapter. So yeah, anyone wants to read? Can I read today? Yeah, sure. Go ahead, please. Thank you. Chapter 9, how to use the power of your subconscious for wealth. If you are having financial difficulties, if you are trying to make ends meet, it means you have not convinced your subconscious mind that you will always have plenty and some to spare.
You know men and women who work a few hours a week and make fabulous sums of money. They do not strive or slave hard. Do not believe the story that the only way you can become wealthy is by the sweat of your brow and hard labor. It is not so. The effortless way of life is the best. Do the thing you love to do and do it for the joy and thrill of it. Yeah, one sec. So very important paragraph. I hope हम सबको ये समझ आ गया है कि पैसा मेहनत से नहीं आता है. Your life has to be easy and effortless. This is an affirmation that I myself do every day, that everything comes to me, every success, all money comes to me with ease and effortlessness. It's effortless. It has to be like that. You don't have to put in hours and hours together. You know, बहुत मेहनत physical labor कर रहे हो, mental labor कर रहे हो, 20 घंटा, people work for 16 hours in a day and then not getting the kind of acknowledgement that they should be getting. Money doesn't come by hard work. The most hard work here in India is done by the rickshawalas. Very hard work. Okay, lot of physical labor, but they are not wealthy, right? Money does not come like that. Money comes with frequency and vibration, क्योंकि money की frequency बहुत high होती है. जब तक आप अपने आप को खुश और ग्रज फ्री और वो सब नहीं रखोगे तब तक पैसा पुल नहीं होता. और हम में से बहुत सारे लोगों की इतनी अमेजिंग स्टोरीज हैं पैसा हमने जिस तरह से रिसीव किया है, दैट इट्स एक्चुअली फिर अभी लगता है कि कैसे आया था तो पता नहीं कैसे आया था, बट आ गया पैसा जितना चाहिए था, ठीक है, जितना भी सोचा था. सो ये बहुत जरूरी है समझना दैट बहुत सारे मेन एंड विमेन हैं जो बहुत कुछ घंटों के लिए काम करते हैं एक हफ्ते में एंड दे मेक फैबुलस, हमसे 100 गुना ज्यादा कमाते हैं वो, ठीक है. दे डू नॉट स्ट्राइव एंड स्लेव हार्ड, दे आर नॉट वर्किंग वेरी हार्ड. सो डॉक्टर मर्फी ने पहले ही बताया है, do not believe the story that the only way to become wealthy is by the sweat. मतलब आपको बहुत ज्यादा sweat of the brow, so बहुत ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ रही है और hard labor करना पड़ रहा है. So it is said that it is not so. The effortless way of life is the best. Like we had studied in the previous chapter, easy does it. Okay. So the effortless way of life is everything comes to me easily and effortlessly. Okay. Keep telling this to yourself again and again. Everything comes to me, everything good comes to me easily and effortlessly. And do the thing you love to do and do it for the joy and thrill of it. तो जब आप काम में मजा डिराइव करने लग जाओगे, जब तक आप सोचोगे ओ गॉड आज फिर ऑफिस जाना पड़ रहा है, ओ गॉड आज सैटरडे का दिन है, आज मेरा इतना सबकी छुट्टी होगी, बस मुझे ऑफिस जाना है और आज बहुत मेहनत भी करनी है, बहुत काम भी करना है, देन इट इज नो फन. सो रोंडा बर्न ने वर्क वाले चैप्टर में ये बताया था that you should be excited about your vocation, जो भी आपका है, every day of your life and look forward to going to work. Whether it is your business, whether it is your whatever, जब तक वो feeling नहीं आएगी ना, that excitement and joy की, तब तक आपको मजा नहीं आएगा काम में और तब तक वो आपको it will not mint money for you. और money does not always come from one source of income. It comes from multiple sources of income. ठीक है. सो अब कैसे आएगा, हाउ में हमको जाना नहीं है, आप वाई में रहो. वाई डू यू वांट मोर मनी? आपको मजे करने हैं, वाओ. और आपको क्या करना है, आपको अपने बच्चों को बहुत अच्छे एग्जॉटिक प्लेसेस पे लेके जाना है, उनको घुमाना है, वाओ. और पैसा किस लिए चाहिए? इज दैट यू वांट टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड. Okay, that's get those feelings that you want to buy some nice designer clothes. And what do you want to do? You want to help others, you want to support an NGO. And what do you want to do? आपको उनको AC खरीद के देना है NGOs को. Okay, and what do you want to do? Maybe you want to pay the electricity bill. And what do you want to do? You want to like try different cuisines, around the world because you love food, you love healthy food. So you want to go for your like whatever, some skiing, hiking, जो भी आपकी ड्रीम है आपको वो करना है और इस चीज पे फोकस करो.
हाउ कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या है। जब आपको $100 million रोज मिलने, मतलब हर महीने मिलने लग जाएंगे, तो आप क्या क्या करोगे, उस चीज पे फोकस करो। उसी को फोकस व्हील बोलते हैं ना, बाय द वे। अगर अब्राहम हिक्स की जो आस्क एंड इट इज गिवन है, उसमें बहुत अच्छे से उन्होंने फोकस व्हील को समझाया हुआ है। फोकस व्हील में सेंटर में लिखो अबंडेंस ऑफ मनी और वट एवर अमाउंट जो आपने सोचा है पर मंथ। फिर उसके स्पोक्स में बनाओ उसको आगे आगे जाके, कि उस मतलब वाई, व्हाट विल यू फील, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू आर गोइंग टू डू। So you are totally diverted towards the future. You are in the future presence. जैसे बेंटिनो मसारो बोलते हैं, be in the future presence, that वो आप ये करोगे, वो करोगे, वो करोगे, और कितना मजा आएगा, और कितना फ्रीडम लगेगा आपको, फाइनेंशियल फ्रीडम, कितनी सिक्योरिटी लगेगी आपको ना, सिक्योर फील करोगे that yes I have that much with me and I can do anything। आप कौन कौन से हायर कोर्सेज कर रहे हो, आपको में भी कुछ करने का मन था, अभी नहीं उस तरह से हो पा रहा है। और जब इजी वर्क होगा तभी तो कर पाओगे। अगर 16 घंटे काम करोगे तो आपका वर्क लाइफ बैलेंस तो पूरा हिला डुला ही रहेगा ना। मतलब इट विल नॉट बी, हाउ विल यू, इफ यू वर्किंग फॉर 16 hours, you might be making a lot of money, but then you don't have time for anything else. You don't have time to enjoy that money that you are receiving, isn't it? तो वो भी नहीं होना चाहिए ना ऐसा। So इसीलिए easy does it. Always remember, easy does it for you. So keep telling yourself, easy does it for me. Everything, every success, money, everything, good health, everything is coming to me with ease and effortlessness. That's how easily it has to be. Hanji. Yeah. I know an executive in Los Angeles who receives a salary of $75,000 yearly. Last year, he went on a 9-month cruise, seeing the world and its beauty spots. He said to me that he had succeeded in convincing his subconscious mind that he is worth that much money. He told me that many men in his organization getting about $100 a week knew more about the business than he did and could manage it better. But they had no ambition, no creative ideas, and were not interested in the wonders of their subconscious mind. Yeah, so this is an example that is given of this person. ये 1960s और 50s की बात है। उस वक्त एनुअल $75,000 एक बहुत बड़ा अमाउंट था। और उन्होंने बताया है कि मैं आई वॉज अ वेरी ऑर्डिनरी पर्सन, और मैं ज्यादा काम भी नहीं करता था, और मेरे ऑर्गेनाइजेशन में मुझसे भी बहुत ज्यादा केपेबल लोग थे जो मुझसे बहुत अच्छा काम करते थे, और लेकिन उनको $100 अ वीक मिलता था, और उनको बिजनेस के बारे में मुझसे कहीं ज्यादा पता था, और वो बिजनेस को बहुत अच्छे से मैनेज भी करते थे। बट उनकी जिंदगी में कोई एम्बिशन, कोई पर्पस नहीं था, कोई क्रिएटिव आइडियाज नहीं थे, और उनको सबकॉन्शियस माइंड में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इन्होंने बताने की कोशिश भी की होगी, तभी इन्होंने लिखा है कि उनको इस वाली साइंस में कोई इंटरेस्ट ही नहीं था सबकॉन्शियस माइंड की। So they kept working hard, and they kept working even harder, and more work came to them, and working harder without any joy and purpose in life. So लेकिन ये वाले जो पर्सन थे LA में जो रहते थे, अब ये इन्होंने अपना 1 year का ब्रेक लिया, और ये he went to see the world and the beauty spots, like 9 months, not 1 year, 9 months का ब्रेक लेके। And you know, that is how beautiful, because he used his subconscious mind to create. So that's what I always say, that you know, like how we are programmed is that हम लोग बहुत survival mode में रहते हैं। Let's survive करना, ये making ends meet, okay ये वाला काम पूरा कर देना। Instead of that, try and live in the creation mode. Survival mode हमारे hind brain में होता है, और हम उस पर बहुत बैंक करते हैं। So we don't have to survive, we have to create, be in the creation mode and not the survival mode. That's very important. Create now what you want, create the money that you want, create the kind of, you know, like टाइम दैट यू वांट टू हैव इन योर लाइफ, यू नो, मतलब आपको लग रहा है कि आपके पास समय नहीं होता किसी चीज का, आप क्रिएट करो ना वो वाला टाइम अपने लिए। आपको अगर बोलते हो मुझे वर्कआउट के लिए टाइम नहीं, क्रिएट इट, डोंट कंप्लेन, क्रिएट इट। यू हैव ऑल द पावर्स टू इवन मूव द माउंटेन्स, लेस्ट वी इवन रियलाइज दैट। So once we realize that we have that kind of a creation power, you will constantly keep creating that for us. If actually you see one of my points in the dream list, it is like crazy. People, if you guys will of course understand it, we are in the same zone, but if someone reads it who's outside the subconscious mind zone will find me a mad person. You know, it is that kind of a desire.
But then what? I mean, I want to create, I want to do it for my happiness and whatever it is. I mean, like that's what life is all about. Whereas our life also has a definite purpose. है ना, हम कोई randomly तो हमारा एक purpose है that we want to give joy to others, we want to become happy first. तो अभी हम maybe अपना ही घड़ा भरने में बहुत busy हैं. We want to fill up our pot so that we can start pouring out of it to others also, right? So in our own way, we are already doing a lot. If you're even radiating happiness to in your friend circle, in your family, that's also a very big thing. Okay, so that is what it is. So it all is about how you program your subconscious mind. 1 second time. So 6, okay, we have 10 minutes. Hanji. Yeah. Wealth is of the mind. Wealth is simply a subconscious conviction on the part of the individual. You will not become a millionaire by saying, I am a millionaire, I am a millionaire. You will grow into a wealth consciousness by building into your mentality the idea of wealth and abundance. Yeah, so just don't speak it. It is also जो मैंने focus wheel आपको बताया है that ठीक है, you are a millionaire. Now, millionaire means what? Thoughts and feelings. That has to come. It's not just parroting it. Of course, that will change your frequency, right? But resistance भी आएगा ना. जैसे अभी हो सकता है 50,000 भी नहीं आ रहे और आप पैरेट कर रहे हो, I'm a millionaire, I'm a millionaire. बहुत resistance and blocks आएंगे ये बोलने में. So it will not work. Anything जहाँ पे resistance, यही मैंने अभी last to last, I think day before yesterday के session में बताया था. ऐसी कोई चीज बोलना, make it very workable and doable for you. Something thinkable, something achievable. राइट, सो अचीवेबल विल बी, अगर आप 50,000 कमा रहे हो तो आप अभी 2 लाख का टारगेट रखो तो वो बहुत अचीवेबल लगेगा आपको. 50,000 या 1 लाख का रख लो, चलो 50,000 अभी आप कमा रहे हो, आप 1 लाख का टारगेट रख लो, दैट आई एम इजिली रिसीविंग, और 1.25 लाख से जो भी आपको करना है, बिकॉज दैट विल बी वेरी अचीवेबल, उसमें मेंटल ब्लॉक्स नहीं होते. सो जस्ट बाय पैरेटिंग अभी आप इतना है और आई एम अ मिलियनेयर, आई एम अ मिलियनेयर, नो, इट हैज टू बी थॉट्स एंड फीलिंग्स, बिकॉज दैट्स गॉड. हमने जो पढ़ा था डे 1 में, आई मीन first chapter mein, that your feelings and emotions and your thoughts and feelings are God. That's creation. Okay, so that abundant mindset भी होना चाहिए. ये नहीं कि अभी 100 रुपए अगर जेब से निकलते नहीं है पॉकेट में, लेकिन निकलते नहीं है. बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसे हैं, निकलते नहीं है उनसे पैसे बहुत आराम से. मतलब वो देने में इतना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है कि क्यों यहाँ से भी बच जाए, मेरे वहां से भी बच जाए. दैट्स नॉट अ मिलियनेयर माइंडसेट. मतलब दिमाग ऐसा है, मतलब बहुत ज्यादा कंजूसों वाला, ठीक है, लेकिन चाहिए मिलियन, ऐसा नहीं होता. मिलियनेयर माइंडसेट भी होना चाहिए, खुल के दिल खोल के, चाहे आप 10 रुपए भी दे रहे हो, इतने प्यार से दो. आप अपने स्टाफ को पैसा दे रहे हो, उसमें इतनी ब्लेसिंग्स डालो, यू नो, लाइक उस तरह से पैसा दो. इसको कहते हैं मिलियनेयर एंड अबंडेंट माइंडसेट. दैट ठीक है आपके पास नहीं है, लेकिन फिर भी आप मतलब सपोज 8,000 आपको देना है अपने स्टाफ को, जो घर में जो आपके डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं, तो उनको खूब दिल खोल के अच्छे से खर्चा करो, कोई बात नहीं. कम कर रहे हो उसमें भी ब्लेसिंग डाल के करो. सो इवन इफ यू गिविंग लाइक यू नो मिनिस्क्यूल, अबंडेंट माइंडसेट होना बहुत जरूरी होता है. ठीक है, ऐसा नहीं कि 10 लोगों के पैसे पकड़ के अपने पास रखे हुए हैं और आई एम अ मिलियनेयर, तो विश विल नॉट बी फुलफिल्ड. सो दैट्स आल्सो देयर. सो माइंडसेट हैज टू बी देयर, लाइक खुला दिल होना चाहिए. हाँ जी. Your invisible means of support. The trouble with most people is that they have no invisible means of support. When business falls away, the stock market drops, or they lose their investments, they seem helpless. The reason for such insecurity is that they do not know how to tap the subconscious mind. They are unacquainted with the inexhaustible storehouse within. हाँ देखो, अब बताओ, ये बहुत जरूरी है. इनएग्जॉस्टिबल स्टोर हाउस है सबकॉन्शियस माइंड में. अगर आप ये बोलते हो आई एम रिसीविंग 2.5 lakhs every month with ease and clearly that I'm so grateful that I'm receiving rupees 2.5 lakhs every month with ease and joy.
ठीक है, अब कल को आपके पास जॉब हो नहीं हो, स्टॉक मार्केट, सपोज आप स्टॉक एक्सचेंज का काम करते हो, वहां काम करते हो, तो आपका वो स्टॉक मार्केट गिर गया है, किसी दिन किसी महीने हो सकता है आपको बोनसेस मिलते हो अपने ऑफिस से, so maybe the bonuses come, maybe it's not come, some month or some year, so but then your supply of that amount, that 2.5 lakh whatever, or whatever $1 million or whatever it is, that will constantly keep happening, because subconscious mind has come to believe that this person receives X amount every month with ease and joy. आपने सोर्स के साथ थोड़ी ना अटैच किया था कि वहां से इतना अमाउंट मिल रहा है, आपने तो बस यूनिवर्स को ये रिक्वेस्ट दी थी, डिजायर क्रिएट कर दिया था दैट दिस इज द अमाउंट आई एम रिसीविंग एवरी मंथ. अब स्टॉक बढ़ रहा है, घट रहा है, जॉब से आ रहा है, पेड लीव्स हो रही है, अनपेड लीव्स हो रही है, आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपका जो अमाउंट जो आपने डिजायर किया था वो बरकरार रहेगा. दैट विल कॉन्स्टेंटली बी देयर, यू विल कंटिन्यूअसली रिसीव दैट एक्स अमाउंट एवरी मंथ विद ईज एंड जॉय, because once the programming of the subconscious is that you are receiving that much amount every month, it is an inexhaustible storehouse. Okay, from there you can put a tap, money will keep raining on you. Okay, irrespective of where it is coming from, whether your business has crashed, it's gone up, it's gone down, है ना. businesses का तो यही होता है, कभी ऊपर होता है मार्केट, कभी नीचे चला जाता है, अलग अलग तरह के बिजनेस अलग अलग तरह से काम करते हैं, है ना. जब कोविड हुआ था तो there were people who were thriving also, whereas there were people, the businesses had crashed, but there were people, उनकी income constant थी. My income was constant. I don't know from where I was getting. Sometimes from mama, sometimes from, I don't know, like it was my birthday present from some relative. I really don't know. Yeah, that also had happened. But the income was constant. It did not dip even 1%. In fact, it grew, I think, 5 times. Okay. This is how it happens. This is how the subconscious mind works. So don't channel or don't relate your that income, whatever amount or wealth or whatever it is, coming from a specific source. It can come from multiple sources of income, and easily you don't even know that you are receiving that money. You're not working for someone, you're just working in your a specific job. Okay, but जो आपने अपने सबकॉन्शियस में प्रोग्राम किया, आपको उतना पैसा आता रहेगा. आप अपनी जॉब कर रहे हो, आप 2 जॉब्स नहीं होल्ड कर रहे, 2 जॉब करनी भी नहीं चाहिए ना, 2 जॉब करनी भी नहीं चाहिए, मतलब अलाउड नहीं होता है कंपनीज में दैट यू वर्क फॉर 2, इफ यू वर्किंग फॉर अ स्पेसिफिक जॉब यू आर नॉट अलाउड टू वर्क फ्रॉम सम अदर कंपनी, राइट. सो यू डोंट डू दैट. I have never done that, but money comes from somewhere. I don't know. Actually, if you say during COVID, I really don't know that how my income had grown, but I was very heavily, I was so vela, I had all the time in the world to do these practices. मैं पूरा दिन इस zone में रहती थी, सुबह से रात. I'm happy, I'm successful, I'm loved, and I give love, and I radiate this. And practices I was doing so diligently. I still do very diligently, but I would do that multiple times. जैसे अगर वर्क्स लाइक मैजिक था तो उसमें मैं लगातार पूरे दिन करती आ रही थी. अभी तो ये होता है ना, जाना होता है, फिर ऑफिस का काम करना होता है, तो उस वक्त आप प्रैक्टिसेस थोड़ी कर पाते हो ये वाली. दैट टाइम आई वुड डू इट. इफ Rhonda Byrne had said that cue the magic में, that find cues, पूरे दिन में cues ढूंढती रहती थी. Oh, thank you for that, thank you for this, thank you for this, and I would do all the practices every day. All the practices I would do every day, all जो magic book की थी. That gave me insane amount of success, during that COVID phase. So this is what it says, that there is an inexhaustible storehouse, which is not related to the income coming from your job. When universe gives, you don't even have to get into how, just enjoy that bliss. Yeah. Hanji. A man with a poverty type mind finds himself in poverty-stricken conditions. Another man with a mind filled with ideas of wealth is surrounded with everything he needs. It was never intended that man should lead a life of indigence. You can have wealth, everything you need, and plenty to spare. Your words have power to cleanse your mind of wrong ideas and to instill right ideas in their place.
या तो ये एक्चुअली हम ही अपने आप को वर्दी नहीं समझते कि हमें करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, एकदम से ब्लॉक आ जाएगा, नहीं मैं आई एम नोबडी, आई एम नॉट, आई कांट डू इट, मैं कैसे करूंगी, मैं तो घर से बाहर भी नहीं निकली हूँ आज तक, तो हमारा माइंडसेट ही वर्दी नहीं होता है, वी डोंट थिंक दैट वी कैन। सपोज इफ यू रिसीव एक्स अमाउंट ऑफ इनकम एवरी मंथ, आपको बहुत आराम से आप रिसीव कर रहे हो, अब एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स आपका डिजायर है, जितना अभी है उससे +2, लाइक डबल एंड डबल, ठीक है, आपको उतना चाहिए, x प्लस एक्स, सपोज अभी 10,000 मिल रहे हैं तो 10 + 10 + 10 आपका डिजायर है, ठीक है। अब वो अपने आप को वर्दी तो मतलब अपना वेसल तो खुला रखना है ना, अब वो वेसल ही इतना सा खोल रखा है लिड, तो उसमें फिर कमी आएगा ना, आप पूरा ढक्कन ही हटा दो उसका, लेट इट शावर ऑन यू, तो ये माइंडसेट होता है जो हमको कल्टीवेट करना पड़ेगा। डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने आगे जाके बहुत अमेजिंग एफर्मेशंस दिए हैं इसके लिए, ठीक है, इसीलिए बहुत ही एक्साइटिंग चैप्टर है ये। तो इसमें इतने बढ़िया एफर्मेशन दिए हैं जो आपको वर्दी फील कराएंगे दैट यस माय लिड इज टोटली ओपन एंड आई एम रेडी टू रिसीव द abundance ऑफ मनी एंड showers ऑफ मनी ऑन मी constantly throughout in avalanches of abundance, okay, and easily and frequently. These are the words he's used, that I'm receiving money in avalanches of abundance easily and frequently on a constant basis, okay, and I'm using it for good and good only, मतलब obviously ये भी साथ उन्होंने लिखा है that I'm using the money for good and good only, ऐसे नहीं कि किसी गंदी चीज को मतलब लाइक ऐसे किसी काम में आपको पैसा लगा दो जिसमें विमेन ट्रैफिकिंग इन्वॉल्व है, या कोई इस तरह का स्मगलिंग वाली चीज है, या जहाँ पे ड्रग्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, वो वैसे करेंगे तो वो इन्होंने बहुत क्लियरली वो चीज बता दी है कि देखो पैसा आएगा अगर आप उसको गुडनेस के लिए यूज करोगे, अपनी खुशी के लिए, अपने कपड़े खरीदो, मजे करो, मौजों में रहो, अपना डांस करो, अपना like go and savor, enjoy the world and enjoy the beauty of the world and live an abundant life, and उन सब में करो, use it for good and good only। तो इस तरह के उन्होंने बहुत सारे एफर्मेशन दिए हैं जिससे हमारा माइंडसेट चेंज होने लग जाएगा। मे बी अभी माइंडसेट थोड़ा कॉन्स्ट्रिक्टेड है, सो इसीलिए इन्होंने लिखा है कि यू कैन हैव द वेल्थ, एवरीथिंग यू नीड एंड प्लेंटी टू स्पेयर। और उन्होंने ये चीज भी लिखी हुई है अपने एफर्मेशन दैट आई ऑलवेज हैव अ डिवाइन सरप्लस, सो इट्स नॉट दैट ठीक है कमा रहे हो उतना ही खर्च कर रहे हो, खूब सरप्लस है, कल को इमरजेंसी भी आती है, वो खूब खर्चा करोगे फिर भी आपके पास बहुत सारा रहेगा, सो ऑलवेज हैव अ गुड बैकअप ऑफ मनी, लाइक, सो दिस काइंड ऑफ अ माइंडसेट दैट नीड्स टू बी कल्टिवेटेड, इट नीड्स टू बी कल्टिवेटेड एंड स्ट्राइव फॉर, so that we will be cultivating it। मे बी अभी नहीं है, अभी हमारा एक्चुअली इतनी सी लिड खुली हुई है, ठीक है, सबकॉन्शियस माइंड की, तो फिर नहीं बिलीवेबल लग रहा है कि ठीक है आई कैन बी वर्दी ऑफ रिसीविंग दैट काइंड ऑफ अ लाइफ, इट इज लुकिंग टू बिग टू बी ट्रू राइट नाउ, okay, because we get into how mostly, so but then that's how it is। So it says your words have power to cleanse your mind of wrong ideas। wrong ideas क्या आते हैं, that पैसा बहुत मेहनत से आता है, पैसा लोगों का दिमाग खराब कर देता है, टू मच मनी ऑलवेज, रातों की नींद चली जाती है, तो मेरे पास बस इतना ही ठीक है, मुझे इतना ही चाहिए, अरे नहीं ऐसा नहीं सोचो, ठीक है। सो इसीलिए ये सारी चीजें हटानी पड़ेगी। पैसे से आप बहुत मजे कर सकते हो, पैसा सब कुछ नहीं होता है बट बहुत कुछ होता है, ठीक है। सो ऑफ कोर्स योर वर्ड्स हैव पावर टू क्लेंस योर माइंड ऑफ रॉन्ग आइडियाज एंड टू इंस्टिल राइट आइडियाज इन देयर प्लेस। सो राइट आइडियाज अभी हमको ये बताएंगे आगे जाके कि क्या क्या है, that money is beautiful, I love money, money loves me, I always have a divine surplus, my income is constantly increasing, I'm worthy। अगर आपको लग रहा है कि आप अपने आप को इस लायक नहीं समझ रहे हो कि आपको लाखों रुपए मिले हर महीने, तो आप ये अपने आप को बोलो, I'm worthy of receiving money in abundance, okay, and it's raining money on me। So this is how we will have to change our mindset slowly। और पैसा खर्च करते वक्त बहुत खुश होके खर्च करो, दिस इज व्हाट आई वुड से। और अगर कोई चीज आपको लग रही है कि नहीं बहुत महंगी है लेकिन मुझे बहुत पसंद है, आज जाके वो सामान खरीद के लाओ अपने लिए, जस्ट ऑर्डर इट। अगर ऑनलाइन ऑर्डर करना है करो, आप जैसे ही वो करोगे ना, आप देखना कि आपके पास कहीं से पैसा, जब खुशी से हम खर्चा करते हैं ना, वो पैसा वापस हमारे पास मल्टीप्लाई होके आ जाता है।
सो अगर अभी तक आप कॉन्स्ट्रिक्ट करके रख रहे थे कि नहीं मुझे चाहिए लेकिन थोड़ा सा मेरे बजट से ज्यादा हो रही है, मेरे बजट से ज्यादा है, जस्ट डू इट, गो अहेड एंड डू इट टुडे, दैट विल गिव यू एन अबंडेंट माइंडसेट। और बहुत खुश होके खर्चा करना, और खुश होके खर्चा करोगे पैसा मल्टीप्लाई होके वापस आता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी पैसे को खींचती है, मेहनत पैसा नहीं खींचती है, ठीक है, क्रिएटिविटी पैसा नहीं खींचती है कि मैं तो कितना अच्छा काम करती हूँ फिर भी मेरे पास पैसे नहीं आते, मेरा इतना टैलेंट है, दैट डज नॉट, मनी कम्स ओनली विद अ हायर वाइब्रेशन एंड हायर फ्रीक्वेंसी, खुशी से, खुश होके, खुश, ब्लेस करना, लव करना, इस तरह से, है ना। सो दैट इज व्हाट इट इज। Also, we are done for today. Thank you so much, Priya, for reading. Very, Thank very you, important chapter. So, कल हम सीखेंगे, कल का जो हमारा टॉपिक है, इट इज कॉल्ड बिल्डिंग अ वेल्थ कॉन्शियसनेस। तो अभी हो सकता है वेल्थ कॉन्शियसनेस नहीं हो, अभी हमने अपने आप को लिमिट कर रखा है फ्यू लैक्स के लिए कि एक महीने में मैं कुछ लाख ही रुपए कमा पाती हूँ, क्योंकि हमने अपने आप को उसी वर्थ से अटैच कर रखा है, ठीक है। कल से हम अपना वर्थ खोलेंगे, हम अपनी लिड खोलेंगे थोड़ी सी, अपने सबकॉन्शियस माइंड का जो वेसल है हमारा, उसके ऊपर जो हमने ढक्कन लगा रखा है इसलिए छप्पर फाड़ के नहीं आ रहा, उस लिड को हटाएंगे धीरे धीरे। तो हम अपनी कॉन्शियसनेस चेंज करेंगे, वेल्थ कॉन्शियसनेस, और अपने आप को वर्दी बनाना सीखेंगे कि हाउ वी कैन रिसीव मनी इन एवलांचेस ऑफ अबंडेंस ऑन अ कांस्टेंट बेसिस, okay, and we will always have a divine surplus, right? So that kind of insane money that we need to kind of really take, enjoy, thrive, flourish, give to others, you know, float in that river of wealth so that we can enjoy the beauty all around. So yeah, I mean, like when we did our Tony Robbins course, so that time we were taught that you know, बहुत उन्होंने भी यही समझाया था टोनी रॉबिन्स ने, तो उन्होंने अपने एग्जाम्पल से बताया था कि मेरा घर है बहुत सुंदर सा और बहुत ब्यूटीफुल बार है बड़ी सी, एंड यू नो दुनिया के सारे तरह के जो ड्रिंक्स एंड एज्ड वाइन उसमें है, यू नो दैट हिज फ्रेंड्स कम एंड एंजॉय। फिर उन्होंने अपना वो रूम दिखाया था उसमें, मतलब अपना जो लिविंग रूम था वो दिखाया था, ह्यूज लिविंग रूम, स्पेशली उसमें एक डांस फ्लोर अलग से बनाई हुई थी, और उसमें पूरा यू नो म्यूजिक एंड कैरियोके सिस्टम पूरा लगा हुआ था। फिर उसके बाद उन्होंने दिखाया था उनका जो स्विमिंग पूल है उसके साथ में उनकी जकूजी एंड सोना ये उन्हीं के घर में था, और वो घर ओवरलुकिंग द सी, इतना ब्यूटीफुल उनका वो वाला ह्यूज हाउस था, लाइक मैंशन भी क्या ही छोटा वर्ड है, इट वॉज बेटर देन एनी 5 स्टार होटल। फिर उन्होंने बताया था ये सब हमको उन्होंने इसलिए दिखाया था अपने सेशन में क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि वेल्थ इस तरह से भी आप एंजॉय कर सकते हो और ये करना चाहिए। ये मत सोचो कि ये करके क्या करना, इतने बड़े घर में रह के क्या करना, यू नो जकूजी और पूल अपने ही घर में होने का क्या फायदा, you know, why do you need to have drinks around the world, why do you need to have all this, why do you need to have a dance floor, मुझे नहीं करना, मुझे डांस करने का शौक नहीं है। तो हम लोग बहुत अपने आप को लिमिट करके रखते हैं। फिर उन्होंने बताया था कि when I travel I stay in these kind of hotels and this is the sample of my room where I stay and the view there, उसके सामने इंफिनिटी पूल, उनके रूम के सामने उन्होंने दिखाया था, एंड ही सेड दैट इट्स द मोस्ट स्टनिंग ब्यूटीफुल सनराइज सनसेट उनको अपने रूम से दिखते थे। तो उन्होंने कहा कि पैसे से आप ये एंजॉय कर सकते हो। देन ही शोड वन ऑफ द दुबई होटल्स, यू नो, जिसमें वो रुके थे, बुर्ज अल अरब था कि कौन सा था मुझे याद नहीं आ रहा अभी। तो उन्होंने दिखाया दैट आई स्टे हियर एंड दिस इज हाउ इट लुक्स एंड इट डज गिव हैप्पीनेस, you know, while at the same time he also has a solid purpose in life, you know, टोनी रॉबिन्स हमारी जिंदगी उन्होंने ही तो चेंज की है। अगर मैं आपको इतना खुल के ये सब बता पा रही हूँ तो वो ही इज वन ऑफ माय मेंटर्स, यू नो, इतना आप मेरे मुंह से उनका नाम सुनते हो कि ही इज एक्चुअली ट्रांसफॉर्म। आप प्लीज उनको जितना आप सुन सकते हो उतना यूट्यूब पे जाके सुनो, मतलब वो तो कुछ और ही चीज है, मतलब ही इज, मुझे लगता है कि भगवान का रूप लेके इस धरती पे आए, ठीक है। सो इतने, मतलब वो पैसा क्यों कमाना चाहते हैं, क्योंकि उनको मिलियन लोगों का, 100 मिलियन लोगों का पेट भरना है रोज, यू नो, बच्चों को खाना खिलाना है, और जो होमलेस हैं उनके लिए वो करते हैं। तो इस तरह से तो पर्पस बहुत स्ट्रांग है। वाइल ऐसा नहीं है कि वो अपनी जिंदगी एंजॉय नहीं करते, खूब नाइट क्लबिंग करते हैं, खूब मजे करते हैं, बहुत एग्जॉटिक जगहों पे वो ट्रैवल करते हैं, बहुत लग्जरीज एंजॉय करते हैं, और हमेशा बोलते हैं कि जब कहीं पे ट्रैवल करो तो यू नो लाइक व्हाई नॉट स्टे इन दैट होटल रूम जिसका 1 मिलियन टैरिफ है पर नाइट, व्हाई कांट यू डू दैट। कोई मतलब कहते हैं कि इतना पैसा भी होता है, दैट्स लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन,
मतलब ओशन में से एक ड्रॉप हिलती है तो कोई फर्क नहीं पड़ता है उस ओशन में, वो पानी और नीचे से जनरेट हो जाता है ना। तो वो कह रहे थे कि इसलिए ये अगर आप 1 मिलियन भी अगर एक दिन में सोचते हो तो वो एक ड्रॉप इन द ओशन की तरह होता है, इट इज नॉट लाइक अ वेरी बिग थिंग और समथिंग। सो उन्होंने बताया था कि इंजॉय दैट काइंड ऑफ लग्जरी बिकॉज वो आप ही के लिए तो बनी है, अदरवाइज क्या। हाँ, वो एटलांटिस होटल का उन्होंने दिखाया था। सो इट वाज लाइक यू नो, सो ऑल दैट लग्जरी दैट ही सेड इज देयर फॉर यू टू एंजॉय एंड व्हाई नॉट। I mean, like he says that generate that kind of a money, create that kind of a money. Why do you think that you can't do it and it is only for the rich and famous? It's for everybody, you know. So his story, if you see, I mean, till a few years ago, like उन्होंने अपनी जो कहानी बताई थी, उनके पास $100 भी नहीं होते थे पॉकेट में। मतलब उनको अपना रेंट नहीं दिया जाता था, घर छोड़ के भाग गए थे क्योंकि लैंडलॉर्ड उनको ट्रबल कर रहा था कि पैसे दो, मतलब रेंट तो दो घर का। तो वो अपना घर छोड़ के उस दिन वॉक करने के लिए चले गए थे। वो कह रहे थे मेरे पास टैक्सी के भी पैसे नहीं थे, खाने के भी नहीं थे, तो उन्होंने कुछ खाया हुआ नहीं था एंड टैक्सी के पैसे नहीं थे। वो कहते हैं आई वाज वॉकिंग एंड वॉकिंग एंड वॉकिंग एंड टॉकिंग टू द यूनिवर्स कि प्लीज मुझे कुछ ऐसा दो, पैसे दो कि मैं रेंट दे पाऊँ, उसको मैं मुंह दिखा पाऊँ, क्योंकि वो वापस ही घर नहीं जा रहे थे और चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे। And he's turned around his life only by these things, you know, by programming his subconscious mind to this extent that he is so abundant right now. I mean, like one of the richest persons, while at the same time there is a very higher purpose, a giant purpose in his life. You know, he's constantly traveling to do good to people and all of that. Of course, we know what he does for us. He writes some amazing books and you know, YouTube उनका लगातार कुछ ना कुछ उस पे डाल रहे होते हैं, इतने कोर्सेज करते रहते हैं। और जब कोर्सेज करते हैं ना, वो मतलब बिल्कुल लिटरली वो यूएस टाइमिंग्स में करते हैं, तो हम तो इंडिया में बैठे हुए होते हैं। इतने लंबे उनके कोर्सेज होते हैं, मतलब लिटरली बोलते हैं कि 6 घंटे का कोर्स है और 8.5 घंटे 9 घंटे मतलब लगातार वो बता रहे होते हैं। और अगर जैसे 4 दिन का कोर्स होता है तो 1+1 सेशन वो अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं। वो कहते हैं नो आई एम नॉट डन, आई वांट टू गिव यू मोर, and then he takes, you know, so wo purpose in life, while at the same time he's enjoying his life also. So it's not that you can't do both, you can do both. You can have a very solid purpose in life, you can look your best, you know, while at the same time you are very, you know, like your life has a deeper meaning and you actually the man of substance or woman of substance wherever you are, that also. So together we make a good story, you know, like all of these. Yeah, so that is what it is about. Ma'am, can we imagine this for someone else? Yeah, I mean, like, if you filled your life enough and if you think that you've done enough, you start imagining it for someone. In fact, कल से अब यही है magic book में, we are using our life for someone else. So yeah, please do that. Great. You can imagine it for Okay. someone else. But you know, you have to be part of the story. So this is what all the mentors have taught us, that you have to be part of that story if you're creating for someone else. Like, you know, suppose you want your children to enjoy that kind of a luxury. Yeah, Like that. yeah. So then you have to be part of it. Like they are informing you or you are telling them or you all are sitting together, you all are having a drink together like that. No, but if others are not ready to, you know, go read this book or something, but I really want it to happen for them, then is it possible? Yeah, why not? I mean, you can put it in your dream list if it's that bigger dream, or you can visualize it. Okay, thank you. Yeah. मैम Yeah. हाँ निकिता बोलो। मैम मेरी शेयरिंग है। हाँ मेरी बताओ। एक विश लिस्ट कंप्लीट हो गई। विश लिस्ट में से एक चीज की पूरी विश लिस्ट? नहीं एक चीज। पूनम मैम अच्छा। को पता है, मैंने ऑफिस के लिए बताया था थोड़े टाइम पहले, तो वो मेरे हस्बैंड को ऐसा था कि ये लोकेशन पे है नहीं है, लेकिन मुझे वो सब अच्छा लग रहा था, वो जगह पास में है घर के और ये वो बजट में भी ठीक है हर तरह से। वो बोल रहे थे ना इससे भी अच्छा, इससे भी, तो बोला कि 4-5 साल जाने दो फिर और कुछ और अच्छा लेंगे। मुझे अभी मतलब शुरुआत तो छोटी होती है ना, वो बड़ा बड़ा ही सोचे। मैंने बोला नहीं अपने यही सही है। मान नहीं रहे थे, फिर मैंने वो स्किप कर दिया। मैंने कहा ठीक है छोड़ो, अब कुछ और देखते हैं। तो मेरे पास जो मेरी फ्रेंड है वो खुद ही ये करती है, तो एजेंट के उसका काम करती है, तो उसने मुझे और लोकेशन भेजी, मैंने उनको सेंड कर दी। चलो आपको ये नहीं पसंद है तो अब इसमें से और देखो। तो फिर बोले नहीं अभी ठीक है, अपने ने जो वो पहले सोचा है वही सही है। Now, congratulations and wish you many more success and wish your clinic does very well. It जी should be मैम। full of और people. It should be full of people always. वो पता नहीं स्टार्ट हो गया, मैंने आपको 2 दिन पहले बोला था ना।
और फिर मुझे ग्रीनरी बहुत पसंद है, तो अभी ये वैकेशन में 2-3 बार तो हम ऐसे ही जा रहे हैं, ग्रीनरी देखने ही जा रहे हैं, घूमने वहीं जा रहे हैं, जैसे केरला हो गया, अभी तिरुपति जा रहे हैं। तो वैसी जगह ही जा रहे हैं जो मुझे ऐसे, पहले मैंने सोचा था मैं कभी यहाँ जाऊंगी पहाड़ों में, ग्रीनरी में, ट्रीज में, तो वो सब पूरा हो रहा है। मैम आपका वीडियो स्टक हो गया। Congratulations, Nikita. That's great. थैंक यू, That's lovely. That's Congratulations. lovely. Congratulations, Nikita. So lovely to थैंक hear. यू।